day and a half discussion in Alula was this was all informal, candid, open. And I thought it was important to share with this August audience some of the themes which were coming out of that conference, because that's where we start, the emerging markets, and then we come to Pakistan. So what I learned over that couple of days was that emerging markets do have specific vulnerabilities, whether it's on the fiscal side or on the external account side. But by and large, emerging markets have a good story to tell because they have avoided a macro crisis for the last 25 years. GFC was very much an advanced market discussion back in 2018. And certainly, emerging markets have entered 2025 on a strong note. And this is on the back of macro stability. Actually, across emerging markets, a very stable banking system, structural and bold reforms, which are underway in a number of emerging markets. Now, this is very important because in the wake, and I'm sure this is going to come up for discussion over the next couple of days, everything which is happening outside, what we can call externalities, whether it's geopolitics, demand fragmentation, protectionism, threat of spillovers, and this goes beyond financial spillovers. And almost there was a consensus among the emerging market finance ministers that we need to focus on what is controllable, what is in our hands, and therefore stay the course. And in fact, it's President Jin of AIB, and I quote him saying, "Keep the caravan moving while there are clouds on the horizon." Now, some of the key themes which were coming out of this conference over the last weekend, I'll just go through those. Number one, most of the finance ministers were laser focused on productivity-led growth. Most of the finance ministers talked about private sector leading their countries in their own jurisdictions, whereas government only providing the policy framework and policy continuity. Most of the finance ministers are very clear that improving governance and therefore ownership and accountability at the government level is the right thing to do. Deregulation, cutting the red tape, putting the bureaucracy down. In fact, from Argentina, the minister who represented Argentina was not Minister of Finance, was actually Minister of Deregulation. No surprises there. The third one was fiscal prudence, domestic resource mobilization, and prioritization on the expenditure front. So differentiating between good costs and bad costs, which obviously require very tough policy choices, as we are seeing here in Pakistan as well. The second last thing I would mention is, which was very important and was very encouraging, because in this whole scheme of things, you can appreciate there are countries which are well endowed, and there are countries which require help. And the topic of this discussion was shared challenges and shared future. And the fact that this South-South collaboration, where well-endowed countries are willing, ready, and able to step up to help other emerging economies, working with each other in terms of not only increasing investment and trade flows, but also the technical support, because that's where capacity building comes in. And the last thing is that everyone appreciated the fact that global trade may not be a lever of growth anymore because of everything that we are seeing. However, the regional connectivity and the corridors, and whether we can work with each other, अगर मैं पाकिस्तान के context में देखूं what we need to do more with GCC, what we need to do more with Africa, what we need to do more with Central Asian republics, Turkey, etc.
it made a lot of sense that we move in that direction from a South-South collaboration perspective. So I just wanted to mention this to this audience because as far as I'm concerned, and the governor was there as well, that these themes resonated. These are themes which we are working on ourselves as well. And so उसमें ये जानना कि पाकिस्तान का ये ना कोई बहुत idiosyncratic risk है और ना कोई ऐसा challenge है जो बाकी emerging markets में नहीं है. But I thought the firmness and the resolve that I saw from the finance ministers of the emerging markets was actually both heartening, and it's all about learning from others as well. Now let's come to Pakistan. आगे बढ़ते बात करें वज़ीर-ए-आज़म का 2 रोज़ा दौरा अज़रबैजान। वज़ीर-ए-आज़म अज़रबैजान के सदर और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। बाहमी दिलचस्पी के शोबों पर बातचीत होगी। तवानाई, तिजारत, दिफा, तालीम और मौसमियाती शोबों में दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। दोनों मुल्कों के दरमियान मुतादिद मुफाहमती याददाश्तों पर मुआहदों पर दस्तखत किए जाएंगे। शहबाज शरीफ बिजनेस फोरम से खिताब करेंगे। IMF का तकनीकी वफ्द क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान पहुंच गया। ज़राए के मुताबिक 4 रुकनी IMF वफ्द के वफाक और सूबाई हुकाम के साथ मुज़ाकरात शेड्यूल हैं। ग्रीन बजटिंग, क्लाइमेट ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग पर मुज़ाकरात होंगे। आइंदा माली साल 25-26 के लिए बजट में कार्बन लेवी आयद करने की तजवीज़ पेश की जाएगी। IMF वफ्द के साथ आइंदा मुज़ाकरात के दौरान इब्तदाई मसविदे पर बात होगी। कार्बन लेवी आयद करने की IMF की जानिब से तजावीज़ फराहम की जाएंगी। आज से 28 फरवरी तक तकनीकी विफाक और सूबों के साथ मुज़ाकरात करेगा। कार्बन लेवी आयद करने, इलेक्ट्रिकल व्हीकल और सब्सिडी पर भी बातचीत होगी। IMF वफ्द आइंदा बजट में ग्रीन बजटिंग को वसी करने के लिए तजावीज़ भी देगा। आज मुज़ाकरात में सिर्फ क्लाइमेट चेंज के इक़दामात पर ही मुज़ाकरात होंगे। आज मुज़ाकरात में विफाक और सूबों के क्लाइमेट चेंज के इक़दामात पर ब्रीफिंग। PTI की 22 मार्च को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त की दरख्वास्त खारिज। लाहौर हाई कोर्ट ने एतराज़ बहाल रखते हुए दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को दादरसी कमेटी से रुजू करने की हिदायत कर दी। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। जी अशफाक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर ने बतौर एतराज़ी दरख्वास्त पर समाअत की और तहरीके इंसाफ के रहनुमा अकमल बारी की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि PTI 22 मार्च को आइन और कानून के मुताबिक मीनार पाकिस्तान में जलसा करना चाहती है। इंतजामिया को जलसे की इजाज़त के लिए दरख्वास्त दी, मगर कोई फैसला नहीं हुआ। अदालत इस हवाले से एहतजाज करने की इजाज़त दे, तो इस हवाले से दरख्वास्त पर इतराज़ आयद किया गया था कि अभी मामला रिड्रेसल कमेटी यानी दादरसी कमेटी के पास मौजूद है और उसका फैसला नहीं हुआ। तो अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस का इतराज़ बरकरार रखा और ये कहा कि रिड्रेसल कमेटी के फैसले नहीं करते तो आप अदालत से रुजू कर सकते हैं। अदालत ने इस बुनियाद पर दायर दरख्वास्त खारिज कर दी। जी बहुत शुक्रिया आपका। 6 लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तों की समाअत। सिंध हाई कोर्ट का लापता अफराद की अदम बाज़ाबी पर इजहार तशवीश। गुमशुदा अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तों पर सिंध हुकूमत और दीगर फरीकैन से रिपोर्ट तलब कर ली गई। अदालत ने 18 मार्च तक लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक जवाब तलब कर लिया। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को फ़ोन नंबर तफ्तीशी अफसर को देने की हिदायत कर दी। अदालत ने पुलिस को भाई इकबाल हसन और मोहम्मद हसन की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने शहरी अब्दुल हक की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने इस्तफसार करते हुए कहा, लापता शहरी शाह जलाल क्या करता था? किसी सियासी या मजहबी जमात से ताल्लुक था? तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया, शाह जलाल पान की दुकान चलाता था। बातों से पता चला है इसका मजहबी जमात से ताल्लुक है। अदालत ने तफ्तीशी से पूछा, इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? कोई सबूत है? तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया, तहरीरी तौर पर कोई सबूत नहीं है।